और हम चैतन्य चरितामृत से पाठ कर रहे हैं मध्य लीला अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 72 से 79। 79 is on the board, yes? So I'll start with 73. Speta Braha Deki Tanre Namaskari Pitambara Shiva Shtane Gela Gorahari. At Vriddaloka, Lord Sri Caitanya Mahaprabhu visited the temple of Speta Braha, the white boar incarnation. After offering him the respects, the Lord visited the temple of Lord Shiva, wherein the deity is dressed with yellow garments. प्यार संख्या 73 अनुवाद। वृद्ध कोल में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्वेत वराह का मंदिर देखा। उन्हें नमस्कार करने के बाद महाप्रभु शिवजी के मंदिर गए, जहां अर्चा विग्रह को पीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। Before we go any further, let us offer the Guru Parampara pranams, please. Namah Om Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Prabhupada Namaste Sarvati Deve Gauravani Vitarine Nirvishesha Shunyavare Paskadya Deshatarane Om Agyanata Marindasya Gyana Gyana Shalakaya Chakshun Minitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Caitanya Manubhistam Stapitam Yena Bhutale Payam Rupa Kadamayam Darati Swapadantiham Deham Sri Guru Sri Jita Paramalam Sri Guru Vaishnava Sri Rupam Shaktitam Sagana Lagutam Sujaivam Sarvaitam Savadutam Parijana Saitam Sri Caitanya Devam Sri Radha Krishna Param Sahagana Lalita Sri Vigraha Hare Krishna Guruna Sindhu Dina Bandhu Jagapate Ovesha The first point is that Chaitanya Mahaprabhu, by his personal example, he's going to darshan even of temples of Lord Shiva. So we have to take note of this. तो यहाँ पर मुख्य बात ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से ये सिखा रहे हैं कि वे अलग-अलग शिवजी के मंदिरों में जा रहे हैं, तो हमें इस पर ध्यान देना होगा। A neophyte fanatic devotee in our line might be thinking, oh, Lord Shiva, he's demigod. You know, we don't worship demigods. And, you know, the word boycott, you know, I mean, they might refuse to offer respects to Lord Shiva and bypass the temple. This kind of mentality, somebody who has no training in Krishna consciousness, they could easily have a neophyte, a really low-grade devotee, could have that kind of offensive mentality. It is amongst some people, unfortunately, not hugely common, but it is there if they're not properly educated. तो एक कनिष्ठ भक्त जो कि थोड़ा सा कट्टरवादी होता है, उसके अंदर ऐसी मानसिकता होती है कि वे भगवान शिव को एक देवी देवता देखते हुए उनको अपराध रूप भावना से देखता है और उनके मंदिरों को अच्छे से वो आदर नहीं कर पाता। At Yogapith also we see there's a temple of Lord Shiva there, and all the pilgrimage, Jayapataka Swami originally trained all the pilgrims. The proper obeisances must be offered to Lord Shiva. So, you offer in a different direction, that's all, you know. तो जब हम मायापुर नवदीप मंडल परिक्रमा करते हैं तो योगपीठ में भगवान शिव का एक मंदिर है, तो हिज होलिनेस जयप्रताका स्वामी महाराज
सभी भक्तों को ये सिखाते हैं कि कैसे हमें भगवान शिव के भी आदर देने हैं और उनको भी प्रणाम करना है. So actually, we don't shun, you know the word shun? We don't reject the demigods. We don't reject them. तो वास्तविकता में हम देवी देवताओं का बहिष्कार नहीं करते हैं. So otherwise, what is the, I think it's a Shiva Linga, isn't it, at Yoga Pit? Yes. So we don't reject. We offer, we are trained by Acharya that we must offer respect properly to Lord Shiva, always. तो हम इन देवी देवताओं को बहिष्कार नहीं करते, नहीं तो फिर योगपीठ पर भगवान शिव का मंदिर होने की क्या जरूरत थी. आचार्यों ने हमें ये सिखाया है कि कैसे हमें देवी देवताओं को भी यथा योग्य सम्मान देना चाहिए. Similarly, Durga and Kali, we offer respects. उसी प्रकार से दुर्गा माता और काली माता को भी हम आदर करते हैं. But with proper training in Krishna consciousness and reading Prabhupada's books, then we understand that they are the Sevites of Lord Vishnu. As long as that point is understood, there's no confusion. जब हम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का ढंग से अध्ययन करेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि सभी देवी देवता भगवान विष्णु के सेवक हैं, और जब हम इस बात को समझ जाएंगे तो किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा. So Kali and Durga, they are expansions. They are the wife of Lord Shiva. जो काली हैं वो भगवान शिव की भार्या हैं. So this, the relationship of Kali, I mean everybody knows that Kali is the wife of Lord Shiva, right? Hindus know that, right? Isn't it? Yes, no? They know that she is the wife of Lord Shiva. But I mean, in the Bhagavatam, not so much emphasis on Kali, but Parvati is there. And Kali is expansion of Parvati. Parvati is the sweet, dutiful, very beautiful wife of Lord Shiva, his eternal consort. तो काली माता भगवान शिव की भार्या हैं. ये इस बात को हिंदू समाज में सभी लोग जानते हैं, लेकिन भागवतम में माता पार्वती को के बारे में बताया गया है कि वे शिव जी की बहुत ही सुंदर भार्या हैं और काली माता उनकी विस्तार हैं. You want to see the relationship of Kali and Lord Shiva, you have to read the story of Tulsi Devi. अगर आपको काली माता और भगवान शिव का संबंध समझना है तो आपको तुलसी महारानी की कथा को पढ़ना होगा. And her husband Shankachuda, the demon. और उनके जो पति हैं शंखचूड़ जो राक्षस थे. How many of you have read that story? कितने भक्तों ने उस तुलसी महारानी की इस कथा को पढ़ा है? Most of you have not read the story. ज़्यादातर भक्तों ने नहीं पढ़ा. Well, actually, it's a must-read. You know, must-read. You can understand Tulsi Devi properly unless you read that story. ये कथा को जानना और पढ़ना बहुत आवश्यक है और सबको पढ़ना चाहिए. आप तुलसी महारानी को ढंग से नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इस कथा को नहीं पढ़ेंगे. The whole pastime is given how she descended into the material world and how she ended up marrying a demon. पूरी की पूरी कथा बताई गई है कि कैसे वो भौतिक जगत में आती हैं और वो एक राक्षस से उनका विवाह होता है. And how Shankachuda never forgot his swarup from Goloka Vrindavan. Shankachuda was a friend of Krishna's from Goloka Vrindavan, and then he was cursed by, I think it was Radhika, is it not? शंखचूड़ भी अपने स्वरूप को नहीं भूलते. वो भी भगवान कृष्ण के एक सखा होते हैं गोलोक वृंदावन में, और राधा रानी के शाप की वजह से वे असुर योनि में जन्म लेते हैं. Was it Subal? Subal? Krishna's friend. Who has read the story? You have not read the story? Subal, yes. Because Subal is a, you know, he's different, you know. Subal is different, you know. He's one of the few cowherd boys to interact with Radhika. Sometimes that can be a little risky. सुबल से का कुछ
wasn't the name of the demon. Well, Galandhar is not the name. Isn't it not? Shankachuda, isn't it? The story is there. Somebody have net on your phone, then check it. Because you look on Brinda Devi's webpage. You know that Brinda Devi has her own webpage? You know that? Yes? No? Brinda Devi is a big devotee. She has her own webpage. You please look on there to confirm. BrindaDevi.com. She's a big devotee. The story is there. So, everybody must read that story. So anyways, Kali, the description is given there that Kali joined with Lord Shiva in fighting against the demon. Because she's the wife of Lord Shiva and she's a warrior, so she's a Kshatriya. तो कथा में ऐसा विवरण आता है कि जब भगवान शिव तुलसी महारानी के हस्बैंड से फाइट कर रहे होते हैं तो काली माता भी उनको साथ देती हैं और वो भी एक वॉरियर हैं. So she was very hungry, so she swallowed 10,000 of the enemy soldiers in one gulp. She was hungry. तो वो बहुत भूख लग रही थी उनको, तो उन्होंने एक ही बार में 10,000 शत्रु के सैनिकों को निगल लिया. So we see she fights on behalf of her husband. So we see the relationship, you could say ideal husband-wife relationship, that she supports her husband very nicely. And तो हम देख सकते हैं कि काली माता अपने भगवान शिव के साथ लड़ने भी जाती हैं और अपने पति का पूरा सहयोग करती हैं. तो ये एक आदर्श पति पत्नी का उदाहरण है. It's a very dynamic story. Everyone must read this story. The fight between Lord Shiva and the demon went on for one whole year. ये बहुत ही अच्छी कथा है. They were personal fighting because he was not an ordinary demon, he said. और इसको सभी भक्तों को पढ़ना चाहिए. ये पूरा युद्ध 1 साल तक चला था. He could only be defeated by trickery of Lord Vishnu. That's the only way he could be defeated. Otherwise, he was too powerful. तो वो जो दानव था वो इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव भी उनसे युद्ध में जीत नहीं पा रहे थे. जब भगवान विष्णु ने थोड़ी चालबाजी की तब वो जीत पाए. Did you find BrindaDevi.com? Anyways, so the point is that we don't seek out the demigods, but we offer all respects. And Parikram, now we've done Parikram, I believe there's some Kali deities, other deities like that along the way also, isn't it? तो मुख्य बात ये है कि हम देवी देवताओं को आदर सम्मान करते हैं. And the Parikram party is instructed by our acharyas to offer respects. We don't just pass them by. No, we don't worship demigods. That is aparad actually, and it's an offenses against the holy name also. One should not disrespect demigods. तो जब हम नवदीप मंडल परिक्रमा पे जाते हैं तो आचार्यों ने हमें ये प्रशिक्षण दिया है कि हमको देवी देवताओं को भी आदर करना चाहिए और हम अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये हरिनाम के प्रति भी अपराध है. So this we can learn from these descriptions that Chaitanya Mahaprabhu at this time was playing the role of the perfect Acharya, and he's demonstrating how this respect must be offered to these exalted devas. तो हम इस विवरण से ये सीख सकते हैं कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आचार्य की भूमिका निभाते हुए हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें इन देवी देवताओं को आदर देना चाहिए. So there's a purport to this verse 73. The temple of the white boar incarnation is situated at Gridaloka or Sri Musnam.
तात्पर्य प्यार संख्या 73 में है। तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्वेत वराह का मंदिर रिद्ध कोल या श्री मुष्णम में है। The temple is made of stone and is located about 1 mile south of an oasis known as Bali-Pitam. So 1 mile is how much kilometer? 1.6 kilometers. यह मंदिर पत्थर का बना है और बलि पीठम हरितास्थान में से लगभग 1 मील दक्षिण में स्थित है। It's interesting that Srila Prabhupada uses the word oasis, which would indicate it must be a very dry area. I don't think anybody's been there to this temple, but it must be a very dry area, and then there's a green area apparently surrounding this sacred town, and thus Prabhupada refers it to as oasis. Yes? तो ये जो जगह है यहाँ पर थोड़ा सूखा है और इसीलिए श्रील प्रभुपाद हरित स्थान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। Everybody know the meaning oasis? Anybody does not know what oasis means? हरित स्थान शब्द का अर्थ कौन नहीं जानता? It's a green area where there's some water, and it's usually found in the middle of a deserty area, very dry area. So that's why we have to conclude that it's a very dry area, and then this sacred town is a green oasis in the midst of this dry area. तो हरित स्थान वो जगह होती है जो कि रेगिस्तान में होती है, जहाँ पर थोड़ा पानी मिलता है। तो हम यहाँ पे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो मंदिर है ये भी एक सूखे जगह पे है जहाँ पे एक हरित स्थान स्थित है। There is a deity of the white boar incarnation above whose head Sheshanaga serves as an umbrella. यहाँ पर श्वेत वराह अवतार का विग्रह है जिसके सिर के ऊपर शेषनाग का छत्र है। The temple of Lord Shiva mentioned here is situated Pitambara or Chidambaram, which lies 26 miles. So that's what, about 52 kilometers? Is that right? 26 miles, how many kilometers? South of Chudalore. शिव जी का मंदिर पीताम्बर अथवा चिदम्बरम में स्थित है। यह मंदिर कूड़ालोर से 26 मील दक्षिण में स्थित है और यहाँ शिव जी का अर्चा विग्रह आकाश लिंग कहलाता है। The deity of Lord Shiva there is known as Aksalinga. The temple is situated on about 39 acres of land, and all this land is surrounded by a wall and a road that is about 60 feet wide. Quite impressive. यह मंदिर 39 एकड़ भूमि पर स्थित है और यह भूमि एक दीवार और 60 फुट चौड़ी एक सड़क से घिरी है। Text 74. After visiting the temple of Shiyali Bhairavi, a form of goddess Durga, so Sri Caitanya Mahaprabhu, the son of Mother Sachi, went to the bank of the river Kaveri. प्यार संख्या 74। अनुवाद। शियाली भैरवी दुर्गा देवी का अन्य रूप मंदिर देखने के बाद शची देवी के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु कावेरी नदी के किनारे गए। So here we see that Chaitanya Mahaprabhu on pilgrimage is offering all respects to goddess Kali. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी तीर्थ यात्रा में दुर्गा देवी को भी आदर दे रहे हैं। Purport. The temple of Shiyali Bhairavi is located in the Tanjore district, about 48 miles northeast of Tanjore city. तात्पर्य। शियाली भैरवी का मंदिर तंजौर जिले में तंजौर शहर से लगभग 48 मील उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। 48 miles. You're my kilometer man. 75 kilometers north of Tanjore.
city. It's a very much celebrated temple of Lord Shiva there, and also a very large lake. यहाँ पर शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है और एक विशाल सरोवर भी है. It is said that once a small boy who was a devotee of Lord Shiva came to that temple, and the goddess Durga, known as Bhairavi, gave him her breast to suck. कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त छोटा बालक उस मंदिर में आया और माता दुर्गा ने, जो भैरवी कहलाती हैं, उसे अपना दूध पिलाया. After visiting this temple, Sri Caitanya Mahaprabhu went to the bank of the river Kaveri or Kodirana via or by way of the district of Tiruchirappalli. इस मंदिर को देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु त्रिचिनापल्ली जिले से होते हुए कावेरी कोलीरन नदी के किनारे पहुंचे. The river Kaveri is mentioned in Srimad Bhagavatam 11th canto 540 as a very pious river. श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 40वें श्लोक में कावेरी नदी को अत्यंत पवित्र मानी गई है. So actually, the non-devotees, they don't talk about it because in modern India, the non-devotees, under the influence of secularization, they try to make everything mundane. They're doing a good job of it. Of the English word is denigrating. Denigrating means downgrading, pushing everything sacred down to be mundane and never think about any spiritual connection at all. Talk. दक्षिण भारत में जो अभक्त हैं वो सभी पवित्र आध्यात्मिक वस्तुओं को भौतिक बना रहे हैं. You got what I said about secularization? No. You missed it? It's a very important point. In modern India, the atheistic demons are pushing everything down to become mundane. But in the final analysis, there's nothing mundane about India. तो आधुनिक भारत में जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो सारे भारत के पवित्र स्थानों को भौतिक बनाने पे तुले हैं, लेकिन वास्तविकता में भारत बहुत ही पवित्र स्थान है और इसमें कोई भी चीज भौतिक नहीं है. Because who can say how many square kilometers in India have not been touched by the lotus feet of an incarnation of the Lord or great saints going back to, the beginning of the universe? Who can say which places have not been touched? We don't have the vision. I mean, except for thy soul they can see, but we cannot see, but everywhere, practically, the whole land of Bharatvarsh is sacred. तो ऐसा कौन कह सकता है कि भारतवर्ष की किसी भूमि खंड पर भगवान या उनके अवतार या उनके महान भक्तों के चरण कमल नहीं पड़े हैं? अगर हम सृष्टि की शुरुआत से देखें तो इसीलिए भारत भूमि का हर भूमिखंड बहुत ही पवित्र है. It'll be interesting to see what happens under the Modi government, because back in I guess it was about 1994, after I was in Chennai, and we first came to return to India, I should say, first returned to India after long absence. तो महाराज जब अपने भारत में वापस आए काफी लंबे अंतराल के बाद, तो वे चेन्नई में स्थित थे. Around about that time there was the election where the BJP lost the election. और उस समय एक चुनाव हुआ था और जो बीजेपी थी वो उस चुनाव में हार गई थी. But at that time, Mr. Vajpayee, he had been the prime minister. और उस चुनाव से पूर्व वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे. And if the BJP had won that election, they were going to change the name of India to Bharatvarsh. और अगर वो बीजेपी उस चुनाव में जीत जाती तो इंडिया का नाम भारत वर्ष कर देती. I wouldn't be surprised
if it is on Mr. Modi's long-term agenda to do that. But I mean, he can't do too much at one time. I mean, the people are already shook up about all the radical changes he's making, so he can't do too much at one time. But it's likely down the road that he will do it, because that is part of their, program. They were going to do it, but they lost the election in 1993, 94, somewhere. तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार का भी ये एक एजेंडा है कि वो इंडिया का नाम भारत वर्ष में रखना चाहते हैं, परंतु अभी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, बहुत सारे बदलाव ला रहे हैं, तो एकदम से बहुत सारे बदलाव वो नहीं लाना चाहते. Actually, it's almost inevitable that the name of India will be changed back to Bharat first. Almost inevitable. That is prediction. तो ये भविष्यवाणी है कि ऐसा निश्चित है और कि भारत इंडिया का नाम चेंज होगा. Do you realize the impact when the name of such a prominent nation, because it's fair to say that India is a powerful nation. That's fair to say. It's been was undervalued until recently, but India is actually a powerful nation. तो भारत बहुत ही शक्तिशाली राज्य है और देश है, और अभी तक इसको बहुत ही कम में आंका जाता था. Do you realize what will happen? I'm almost 100% certain that down the road, it may take a few years, that they will change the name back to Bharat first. Almost 100% certain, because they were going to do it before. तो ये तो निश्चित ही है कि वो कुछ समय बाद इंडिया का नाम भारत करेंगे, और जब वो ऐसा करेंगे तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं? So you realize what will happen when inevitably the name of India is changed to Bharat Mahavir, or Paramvir. Do you realize what will happen when the name of India is changed to Bharat? Who can guess? तो कौन इसका अनुमान लगाना चाहेगा कि जब इंडिया का नाम भारत हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? हाथ खड़ा कीजिए. No guesses? Yes. People will read Srimad Bhagavatam because the description comes from there. What is that? People will read Srimad Bhagavatam because description comes from there. Yes, people will read Srimad Bhagavatam. Hare Krishna! मोहन गौरचंद जी ने उत्तर दिया कि जब इंडिया का नाम भारत हो जाएगा तो लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इसका पूरा वर्णन आता है भारत का. First of all, the whole world would be very, very shocked and very, very shook up by this, almost inevitably down the road. Mark this prediction, which I'm making. तो सबसे पहले तो क्या होगा कि पूरा का पूरा जो विश्व है वो हिल जाएगा जब ऐसा होगा. तो I'm making this prediction on the 17th of April 2017. तो महाराज, This is not a joke. This is not a joke. It's almost inevitable that the name of India will be changed back to Bharat first. तो महाराज की ये भविष्यवाणी है आज के दिन की, ये निश्चित रूप से होगा कि इंडिया का नाम दोबारा से भारतवर्ष रख दिया जाएगा. The impact will be massive. और इसका बहुत ही बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ेगा. Because it means the resurgence. You know the word resurgence? No. Study up. The return of Vedic culture. Hariba! तो इसका प्रभाव ये होगा कि जब दोबारा से इंडिया का नाम भारतवर्ष होगा तो इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव होगा कि दोबारा से वैदिक संस्कृति दोबारा से आएगी. Because then billions of people around the world, everyone will be talking about India. Why did they do that? Why did they change the name? Why? What was wrong with India? Why did they change the name? Billions of people will be asking that question. And some of them will mention the name of Lord Vishnu, and some of them will mention the name of Krishna. Wow. तो जब ऐसा होगा तो पूरे विश्व में अरबों खरबों लोग सभी ये चर्चा कर रहे होंगे कि ऐसा इंडिया का नाम भारत क्यों रख दिया गया.
तो फिर इस प्रश्न के उत्तर रूप में कोई कृष्ण भगवान का नाम लेगा, कोई विष्णु भगवान का नाम लेगा, और ये बहुत ही अच्छा होगा. It'll be the final nail. You know, there's a saying in the West, the nail in the coffin. You know, in the West they use coffin. Coffin means a wooden box, you know, that you put dead bodies in, you know. तो पाश्चात्य जगत में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको कॉफिन में रखते हैं, ताबूत. Well, see, it's a foreign concept in India, but it's not done in India, you know, but it's a Western thing. ताबूत एक पाश्चात्य जगत का सिद्धांत है. So it's an old saying, putting a nail in the last nail in the coffin means end. That's it. Bam, you put the last nail and finished. तो जब भारत का, इंडिया का नाम भारतवर्ष रखा जाएगा तो ये बहुत ही बड़ा प्रहार होगा. Nail in the coffin indicates that the final end of the contamination from the British propaganda of the 1800s, it'll be the final end, the nail in the coffin. It'll be the final end to the era of the British propaganda that there's an English word denigrated. I said downgraded India to a primitive nation instead of the glorious Vedic culture. तो जब ये रखा जाएगा, भारत दोबारा से भारतवर्ष नाम होगा इंडिया का, तो जो कि ब्रिटिश लोगों का जो ये प्रोपेगेंडा था कि भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, उस प्रोपेगेंडे का पूर्ण रूप से खात्मा हो जाएगा और दोबारा से भारत की जो प्रतिष्ठा है कि वो महान वैदिक संस्कृति को करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो स्थापित होगी. And Congress actually dared to put out a news release some years ago that said there never was a golden Vedic era in India. It's nothing but Hindutva propaganda. They published that front page in the newspapers. They dared to do like that. Excuse me, but how much more demoniac can you get? तो कांग्रेस ने एक बार ऐसा एक आर्टिकल पब्लिश किया था पेपर में कि उन्होंने बोला कि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई सुनहरा वैदिक समय युग था भारत में, और ये सिर्फ केवल हिंदुओं का एक मान्यता है. तो ऐसा ये इस प्रकार का जो राक्षसी आर्टिकल है वो कितना वो लिखेंगे. So here is mentioned the river Kaveri. तो यहाँ पर कावेरी नदी का उदाहरण दिया गया है. And the Kaveri, Prabhupada points out that the river Kaveri is mentioned in Srimad Bhagavatam as a very pious river. और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कावेरी नदी को बहुत ही पवित्र माना गया है भागवतम में. Actually, it's fair to say that the majority, at least of the major rivers anyways, the majority of the major rivers in India are sacred rivers. Is it not? Correct me if I'm mistaken. The majority of the greater rivers and the most famous rivers, you know, they are all sacred rivers. ऐसा कहा जाता है कि भारत में जितने भी महान नदियां हैं वे सभी बहुत ही पवित्र हैं. But people only have a rough idea of this. They know about the Ganga, and they know about the Jamuna and so forth. These are most famous. तो लोगों को गंगा और यमुना के बारे में तो पता है, ये सबसे प्रसिद्ध हैं. Godavari also. I think Godavari is a expansion of Ganga. I think, is it? Yes. Huh? Yes. गोदावरी गंगा का विस्तार है. Yes, ma'am. So, because Ganga Devi, she's expanded all over the place. You can go places, for example, in South India. I went to one temple where there is fountains on the side of the mountain and water is coming out as Ganga Devi. So all over
India and various places. Ganga Devi is coming miraculously. She's coming out in many places in India, out of rocks and fountains and so forth. Up in Nepal also. तो गंगा देवी भारत के हर क्षेत्र में हमको पाई जाती हैं, और महाराज एक मंदिर में गए थे दक्षिण भारत में, तो वहाँ पर भी बहुत ही चमत्कारी रूप से गंगा देवी एक चट्टान में से आ रही थी और फाउंटेन बन रहा था. So one of the responsibilities of this movement is to reinvigorate. Do you know the word invigorate? No? Study up. Do you know the word invigorate? No? It means put new energy. तो एक महान जिम्मेदारी हमारे आंदोलन की ये भी है कि हम एक बहुत ही नव ऊर्जा इस विषय में संचारित करें. This movement, one of the missions of this movement is to put new energy to revive the basic understanding that Bharatvarsh is a sacred place. Because all the incarnations have walked all over the place, and all the Vaishnava saints like Vidura, they have walked all over. Lord Balaram himself went on pilgrimage all over. Nityananda Prabhu, Mahaprabhu. So practically they've covered all of India. तो हमारे आंदोलन की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम दोबारा से इस भारतवर्ष को उसकी जो महिमा है उसका स्थापना करें कि भगवान के महान भक्तों ने और स्वयं भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, भगवान बलराम जी ने इस पवित्र भूमि पर अपना भ्रमण किया है. For example, Bengal is a fairly large-sized state, you know, and of course Bangladesh used to be part of Bengal. उदाहरणार्थ बंगाल एक बहुत ही बड़ा राज्य है और बांग्लादेश भी पहले बंगाल के ही भाग था. Mahaprabhu ordered Nityananda Prabhu to go to each and every home in Bengal. श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को ये आज्ञा दी थी कि वे बंगाल के हर घर में जाएं. So he did. और उन्होंने इसका पालन किया. Village to village. गांव-गांव जाते थे. You know, traveling sankirtan. और वहाँ पर संकीर्तन, ट्रैवलिंग संकीर्तन. No petrol required, no buses required. बिना पेट्रोल और बसों के. Padayatra. So Nityananda Prabhu was doing Padayatra by himself. I mean, he didn't need anything else, you know. He's नित्यानंद प्रभु स्वयं पदयात्रा पर थे. And this is described in which song? तो ये किस गीत में इसके बारे में बताया गया है? Hello. Huh? I think more than one song actually. Narottam Das Thakur. And Prabhupada reads the purport. Says that Nityananda Prabhu went to each and every home in Bengal. Now, if you want to edit that, go ahead. You understand? Do you want to edit it? You want to downsize it? You want to cut it down? Translate. तो एक नरोत्तम दास ठाकुर जी के गीत में श्रील प्रभुपाद जी ऐसा अनुवाद देते हैं कि भगवान नित्यानंद प्रभु बंगाल के. No. It should have been translated. He went to as many homes as possible. We shall rewrite it, shall we? हर एक घर में गए थे. ऐसा नहीं था कि एज में जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा नहीं. हर एक घर में गए थे. Narottam Das Thakur. Is it not? You don't know. Yeah. It's Narottam Das Thakur. तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जी का एक गीत है. How many of you heard Srila Prabhupada's purport? It's Nitai Padakamalam purport. ये निताई पद कमल का तात्पर्य आप में से कितने भक्तों ने सुना है? Purport by Srila Prabhupada. श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य. Prabhupada says very clearly, and he's quoting from Narottam Das Thakur, that Lord Nityananda Prabhu went to each and every home in Bengal. प्रभुपाद बहुत ही स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि भगवान नित्यानंद प्रभु बंगाल के हर घर में गए थे. Village to village, Padayatra. और पद यात्रा पे हर गांव में गए थे. To each and every house, because that's what the self-realized Saint Narottam Das Thakur says. But you can edit it if you want. हर घर में गए थे क्योंकि
नरोत्तम दास ठाकुर जो कि मुक्त हैं, उन्होंने बोला है। So everywhere the saints have traveled all over India since time immemorial. तो भारत में जो लंबे समय से महान भक्त हर जगह घूम रहे हैं। But people forget, just like the state of Haryana, you know. लेकिन लोग they don't know भूल what it जाते हैं। means. It's हरियाणा just- नाम का भी एक शहर है। You see on the side of the old beat up books, Haryana, buses, old beat up buses, Haryana transport, you know, but who knows Hari? Anyone thinking Hari means the Supreme Personality got it? No. Just all mundane. It's dreadful. तो सभी हरियाणा नाम, ये जो राज्य का नाम है, तो हरियाणा बस ट्रांसपोर्ट इस नाम से बहुत सारी बसें घूमती हैं, लेकिन सामान्यतः कौन सोचता होगा कि हरि जो है वो परम भगवान है। तो सब चीज़ों को भौतिक रूप से देखा जा रहा है। So, text 75. The Lord then visited a place known as Go Samaj. प्यार संख्या 75। इसके बाद महाप्रभु गो समाज नामक स्थान गए, Where he saw Lord Shiva's temple. So here's another Shiva temple. जहाँ उन्होंने शिव मंदिर देखा। Then he arrived at Vedavana, where he saw another deity of Lord Shiva and offered him prayers. तब वे वेदावन पहुँचे, जहाँ उन्होंने शिवजी का दूसरा अर्चा विग्रह देखा और उन्हें नमस्कार किया। So we see as the most perfect Acharya, the Mahaprabhu was offering continually and repeatedly all respects to Lord Shiva. तो हम देख सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही परफेक्ट आचार्य की भूमिका निभा रहे हैं और भगवान शिव को आदर दे रहे हैं। Prabhupada comments, Go Samaj is a place of pilgrimage for devotees of Lord Shiva. It is very important and is located near Vedavana. श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य देते हैं, गो समाज शिव भक्तों का तीर्थ स्थल है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और वेद वन के निकट स्थित है। 76. Seeing the Shiva deity named Amrita Linga, Lord Chaitanya Mahaprabhu offered his obeisances. प्यार संख्या 76। अनुवाद। अमृत लिंग नामक शिव के अर्चा विग्रह को देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नमस्कार किया। Thus he visited all the temples of Lord Shiva and converted the devotees of Lord Shiva into Vaishnavas. इस तरह उन्होंने शिवजी के सारे मंदिर देखे और शिवजी के भक्तों को वैष्णव बनाया। So previously, in prior verses, the same thing is mentioned that Mahaprabhu was converting the devotees of Lord Shiva into Vaishnavas. तो पीछे के प्यारों में भी ये बात बताई गई है कि श्री चैतन्य महाप्रभु शिवजी के भक्तों को वैष्णव बना रहे थे। So, Arvo, हरे, do you remember what we discussed last time? क्या आपको याद है कि हमने पिछली क्लास में क्या चर्चा की थी? What we discussed in this regards? Come on. श्री चैतन्य महाप्रभु विजिटिंग वेरियस प्लेसेस। Where's Sarvagya? About the deities that Lord Chaitanya Mahaprabhu visited. You're the tech man, come on. Tech man's supposed to be on the job. Yes, we discussed he visited many temples, but I'm saying, why was he converting Shaivites into Vaishnavas is my question. प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की जो शिवजी के भक्त थे उनको वैष्णवों में परिवर्तित कर रहे थे? Yes, because Mahaprabhu is because Lord Vishnu is the supreme absolute truth. Lord Vishnu is the origin of Lord Shiva, and the Hindu priests are not going to put emphasis on that.
they may not even know. Generally, they think they're equal. We discussed, remember? तो महाप्रभु शिव जी के भक्तों को सबसे ऊंचा विज्ञान दे रहे थे कि भगवान विष्णु जो हैं वो सर्वोच्च हैं और शिव जी भी उनके भक्त हैं, उन्हीं से आते हैं। और जनरली जो कि हिंदू प्रीस्ट हैं वो इस पे जोर नहीं देते। So what was the reason that Mahaprabhu was converting Shaivites into Vaishnavas? What was the reason? तो क्या कारण है कि शैवाइट्स को महाप्रभु वैष्णव बना रहे थे? He was showing his mercy. That's all right. He showed his mercy in many different ways. But why, Lord Shiva is not outside of divine culture. Then why was he converting them? You've forgotten. भगवान शिव तो वैदिक संस्कृति में ही है, तो फिर क्यों चैतन्य महाप्रभु शिव भक्तों को विष्णु भक्त बना रहे थे? Yes, correct. Yes, because the devotees of Lord Shiva are confused generally under the guidance of their Hindu priest who is not a pure devotee. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कि शिव जी के जो भक्त होते हैं वो सामान्यतया विमोहित रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि भगवान शिव भी परम भगवान है, क्योंकि जो हिंदू प्रीस्ट होते हैं, हिंदू पंडित होते हैं, वो उनको सही प्रकार से नहीं शिक्षा नहीं देते। Does that ring a bell? Yes, it does. Good. We had a thorough discussion on it. That's why Srila Prabhupada says sometimes repetition is necessary. यद्यपि हमारा इस विषय में पूर्ण चर्चा हुई थी, लेकिन हम दोबारा से इस पे चर्चा कर रहे हैं और प्रभुपाद इसको अनुमोदित करते हैं कि बार-बार चीजें कही जानी चाहिए। So this is Go Samaj, and so this is text 76, where Mahaprabhu is converting the Shaivites into Vaishnavas. तो 76 नंबर प्यार में चैतन्य महाप्रभु शिव भक्तों को वैष्णव बना रहे हैं। So we've run out of time. Next time we'll be starting with text 77, and next time we'll make it to text 79. Okay. Oh, it's milking the Surabhi cow, right? There's a lot of interesting things we should discuss, you see. तो समय कम है, इसलिए अब हम विराम देंगे और अगली बार 77 नंबर प्यार से शुरू करके फिर हम 79 नंबर प्यार उच्चारण करेंगे। Any questions? किसी का कोई प्रश्न है? Everybody's understood clearly? Huh? सब समझ गए हैं अच्छे से? Yes, Shamakund. Hare Krishna. Maharaj, Bharat is already another name of India. So how to understand this prediction that in the future name of India will be changed to Bharat? Are they going to pass some resolution abandoning the name India altogether? That nobody should say India. Okay, you can ask the question in Hindi. तो प्रभु जी का प्रश्न ये है कि क्योंकि इंडिया और भारत एक ही नाम है, तो हम ये क्या समझें जो महाराज ने भविष्यवाणी की है कि भविष्य में इंडिया का नाम भारत हो जाएगा। That's a fair question. तो क्या वो रिजोल्यूशन पास करेंगे? Will they pass a resolution? So, 5,000 years ago, was this continent known as India? No. तो 5,000 वर्ष पूर्व क्या
ये भूमि को इंडिया कहते थे। We're going back to Vedic culture. In fact, I don't know, and I doubt any of you are very well versed in history, but at what point did they change the name from, who changed the name from Bharatvarsh to India? Foreign invaders तो maybe? 5000 वर्ष पूर्व जब वैदिक संस्कृति का प्रचलन था तो हम यहाँ इस जगह को भारत कहा जाता था, और हम नहीं जानते कि कब और कैसे किसने भारत का नाम इंडिया रखा। आप में से कोई जानता है? Okay guys, look it up on the net. तो इस पे आप इंटरनेट पे देखिए। This continent was known since the beginning of the universe as Bharatvarsh. No, actually, maybe not, because it's after Maharshi Bharat. It could be different reasons why it's called Bharatvarsh. तो महाराज भरत के शासन के बाद से इस पूरे